Good morning, students and all my dear friends. Welcome to your on YouTube channel Voice of Students. और जीडी क्लासेस के इस क्रम में आज अपना टॉपिक है RTE, Right to Education Act 2009, and that's very important part of our group discussions as education is very important part for a nation. So let's start our topic RTE with a great quote by Sai Reshef. When you educate one person, you can change a life. When you educate many, you can change the world. तो यहाँ साइड रेशफ कहते हैं कि अगर आप किसी एक पर्सन को एजुकेट करते हैं, ये एक ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन आप सभी को, अधिकतर लोगों को एजुकेट करते हैं, तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है. Well, let's start. What is RTE? We need to know in details. With some vital points, we can know all the provisions or we can observe the RTE Act. Right to Education Act, a fundamental right under Article 21A of Indian Constitution. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं. We can consider the vital points of the RTE Act are: it confirms free and compulsory education to all children within the age group of 6 to 14. There will be no school fees, capitation fees, charges, or expenses are to be paid by a child to get elementary education. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है. प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे द्वारा कोई स्कूल फीस, कैपिटेशन फीस, शुल्क या खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है. In case if facility is not provided to complete elementary education by school, then a child of that school can take a transfer to any government school or government aided school. तो यदि कोई स्कूल प्रारंभिक शिक्षा को पूरा नहीं करता है और ये सुविधा नहीं देता है, तो उस स्कूल का कोई भी बच्चा किसी अन्य सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में स्थानांतरण कर सकता है. As each child has also right to get free textbook, writing material and uniform. इस एक्ट के तहत प्रत्येक बच्चे को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री और स्कूल यूनिफॉर्म प्राप्त करने का हकदार है, अधिकार है. The government has the responsibility to undertake school mapping to determine the location of the school. यदि कोई स्कूल प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने की सुविधा नहीं देता है, तो उस स्कूल का कोई बच्चा किसी अन्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में जा सकता है. प्रत्येक बच्चे द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री, वर्दी प्राप्त करना ये उसका अधिकार है. ये इस टॉपिक में बताया गया है. 25% of the seats in private school are reserved for RTE students, which are funded by the government. The center and the state share the joint responsibility to provide funds for RTE education. तो निजी स्कूल में 25% सीटें RTE छात्रों के लिए आरक्षित है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और केंद्र और राज्य RTE निष्पादन के लिए धन प्रदान करने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी साझा करते हैं. Central government has the responsibility to prepare national academic curriculum, teacher training manuals, capacity building and technique support to the state for the promotion of the RTE. The state government has to ensure the development of courses for study, admission of children, teaching staff, infrastructure development of school. It is the duty of every parent to admit their children in school and confirm that they must get elementary education. यहाँ प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनके बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करें और स्कूल में उनका एडमिशन हो. Teachers in the school have to ensure their regular attendance, completion of curriculum with a specific time, assessing the ability of the child, conduct the parent-teacher meeting to obtain overall development of the child. स्कूल में शिक्षकों को अपनी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करनी होती है, विशिष्ट समय के साथ पाठ्यक्रम उन्हें पूरा करना होता है, बच्चे की क्षमता का आकलन करना और बच्चे के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करने के लिए टीचर पेरेंट्स मीटिंग बैठक का आयोजन करना होता है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. This act also talks about the teacher-students criteria or the graph of teacher and students in school. There should be one teacher for every 30 students for the class 1st to 5
and one teacher for every 35 students for class 6 to 8th. There should be one specialized teacher each for teaching science and mathematics, social science, and languages. A full-time head teacher is recommended for a school with more than 100 students. Class 1 to 5 should have 200 working days, and class 6 to 8 should have 220 working days per academic year with a 45 hours work weekly. तो यहाँ टीचर और स्कूल के ग्राफ, टीचर और स्टूडेंट्स के ग्राफ के बारे में बात की गई है। कितने टीचर्स कितने स्टूडेंट्स पर होने चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक और कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के लिए हर 35 छात्रों के लिए एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शिक्षण विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के लिए प्रत्येक के लिए एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। 100 से अधिक छात्रों वाले स्कूल के लिए पूर्णकालिक शिक्षण की सिफारिश की जाती है। कक्षा 1 से 5 में 200 कार्य दिवस और कक्षा 6 से 8 में 220 कार्य दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष 45 घंटे का कार्य सप्ताह होना चाहिए। If we talk about the growth in education with the support of RTE, we can know it, we can observe it with the graph. There is graph of 2000 or there is data of 2018 in which we have got overall education 74.37%, in which we talk about the men, they had got 82.37, for women 65.79. The graph can be observed with one more data. If we compare with 2011, it was 69.3 overall education, 69.3% overall education for the men, 78.88, for women 59.28. So we can here observe the growth of 5%. We can see how that RT Act is playing its role to improve education in India. Here we can observe that literacy in India is increasing year by year as more and more children receiving education with a supportive act like RTE. But the target to get 100% education is still far from us. We will have to implement the better affirmation quickly to get better result. The school has to ensure all-round development of the child. The Right to Education Act has established comprehensive standard to be mentioned by school authorities for creating an easy atmosphere for learning. We can here know the situation in India that still we are quite far from the target to achieve 100% education. यहाँ हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली RTE एक्ट के तहत शिक्षा में सुधार हुआ है, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह से RTE एक्ट ने शिक्षा में प्रतिशत को बढ़ाया है और हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी हम टारगेट से काफ़ी दूर हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि जो ज़रूरी परिवर्तन, जो ज़रूरी नियम है, रेफॉर्मेशन है, सुधार हैं, उनको तीव्र गति से अप्लाई किया जाए। लाखों बच्चे अभी भी भारत में से हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हैं। ऐसे में इस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और सही तौर पे लागू करने की ज़रूरत है, तभी हम 100% शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा प्राप्त करना एक बच्चे का मूलभूत एक मौलिक अधिकार है। As a country can develop with the proper education, when or all the children will get proper education, then definitely the country can become developed country from a developing country, as education is a strong weapon to get success in life. We can here observe, we can here understand the importance of education for a country by one more great quote said by G.K. Chesterton. He said, education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. तो शिक्षा एक समाज की आत्मा है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुजरती है। और इस तरह से हम RT एक्ट के सभी पहलुओं को टच करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं, किस तरह से वो हमारे देश में शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने में, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
we can understand by the all these datas, factual datas and aspects. So now I would like to finish my topic with these kind of words. We'll meet tomorrow with a new topic. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,